Lina ma'am, please switch your video on and start the session. Yes, my video is on, sir. Start the session, please. It's over to you now. Thank you, sir. Good morning, everyone. Respected dignitaries, conveners, coordinators, resource person, faculty members of various colleges, technical staff, and my dear students. I, Dr. Lina Fateh, Assistant Professor from Jawaharlal Nehru Arts, Commerce and Science College, Wadi, Nagpur, welcome you all on the 11th day of the online classes of BA Sem 4 Compulsory English 21-22, jointly organized by Department of English of Barristers Sheshrao, Wankhede, Mahavidyalaya, Mohpa, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur, Nabira Mahavidyalaya, Katol, and Jawaharlal Nehru Arts, Commerce and Science College, Wadi, Nagpur. Once again, I welcome you all. We are honored to have with us Dr. Vaishali Meshram Madam as a resource person. It is my proud privilege to welcome and introduce Dr. Vaishali Meshram Madam. Dr. Vaishali Meshram Madam has done MA, B.Ed and PhD. She is currently working as an assistant professor of English at Dr. M.K. Umathe College, Nagpur. She has been in the field of teaching for more than 20 years. She has kept her academic interest alive by publishing research papers in the national and international journals of repute. She has also been invited as a guest speaker in various programs organized by the reputed institutions of Nagpur. She has hosted various events organized by the different organizations of Nagpur. She has also organized various webinars for students and faculties as well. Her area of interest is Indian writing in English, diasporic literature, and post-colonial literature. She has also written a reference book for BPA Part 1 Semester 1 course. She has also contributed to the course content development of compulsory English of Arts and Commerce faculties. She is a recipient of Shiksha Ratna National Zero Miles Great Award 2019 given by Zero Miles Foundation Nagpur and New Adarsh Shramjeevi Patrakar Sangh. So today, Madam is going to deliver a lecture on the poem Nature. I welcome you, ma'am. Over to you, Dr. Vaishali Meshram, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your kind words. And thank you so much for having me here today. Am I clear, ma'am? Am I audible? Yeah. Loud and clear. Thank you. Very much. Respected secretaries, esteemed organizers, respected conveners, respected coordinators, esteemed resource persons, technical staff, and my dear students. A very pleasant morning to one and all who have converged virtually for the 2-week online classes 2021-2022 on the syllabus of BA Semester 4 Compulsory English prescribed by Rashtrasanta Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur, jointly organized by the 4 institutions of Katol and Nagpur. At the very outset, I wish to congratulate the organizers for taking such a fruitful initiative for the benefit of the students. I also wish to express my sincere and heartfelt thanks to Honorable Dr. M.V. Kolle sir, Principal Barrister Sheshrao Wankhede Mahavidyalaya Mohpa, Honorable Dr. S.K. Naveen sir, Principal Nabira Mahavidyalaya Katol, Honorable Dr. Mrs. K.S. Borkar Madam, Officiating Principal, Jawaharlal Nehru Arts, Commerce and Science College, Wadi, Nagpur, and Honorable Dr. D.V. Naik sir, Principal, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur. I also wish to extend my special thanks to Honorable Dr. Ajit Jachak sir,
Honorable Dr. Pramod Salame sir, and respected Dr. Lina Fate madam, for giving me this wonderful opportunity to be a part of this great venture, and also providing me this wonderful platform to share my expertise with the galaxy of exuberant students. Thank you, sir. Thank you, madam. So, dear students, I request all the dignitaries over here, please mute yourself. Ingre madam, please mute yourself. Meenakshi madam, can you hear me? Hello, Meenakshi madam. Ingre madam? Okay. Yes, So, ma'am. please mute yourself. Please mute yourself. Okay. So, dear all, I'm here with you today to discuss a beautiful poem, Nature. So, let's get started. So, prior to that, let me share my screen. Here we go. Okay. So, my screen is visible, ma'am? Okay, fine. So this presentation has been prepared for, this particular lecture, as I told you, for the syllabus prescribed by RTM Nagpur University, Nagpur, for BA semester 4, compulsory English. Okay. And today we will be discussing the beautiful poem written by, Henry Wadsworth Longfellow. This poem, the name of the poem is Nature. Before we discuss the poem, let us know about the poet. Okay, Henry Wadsworth Longfellow was born on 27th February 1807 in Portland, in the state of Maine, in United States. And he died on 24th March 1882 in Cambridge, Massachusetts, in the United States. Okay. Now, he was one of the widely known and best loved American poets and educators of the 19th century. He was also a prominent member of the group of writers called Fireside Poets. So, बच्चों ये fireside, what does this word fireside poets mean? Why are they called fireside poets? उनको fireside poets क्यों बोला जाता है? Because they have their compositions are so simple. The poems they have written, they are so simple. The poets have used the simple language. The theme is simple. बहुत जो rhyming जो scheme होती है वो भी बहुत प्यारी है, and therefore this poem means the poems of these poets are still prescribed in school in America. आज भी अमेरिका के स्कूल में ये जो फायरसाइड पोएट्स है, इनके जो राइटर्स है, उनकी पोएम्स आज भी वहाँ पे प्रिस्क्राइब की है बुक्स इसमें स्कूल में. और ये जो पोएम्स होती है वो इतनी इजी लैंग्वेज होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, एंड इट इज वेरी इजी टू रिसाइट द पोएम, जिसको हम रेसिटेशन बोलते हैं ना, जिसको गाते हैं लोग. तो यूजुअली क्या होता है कि जो अमेरिका के जो हाउसेस होते हैं वहां पे फायरप्लेस होता है. So usually, the small kids, they used to recite the poem, beside the hearth, around that hearth, or you can say the fireplace. And therefore, because of these beautiful poems, the group of these poets, fireside poets, okay, they have become so popular in America. Okay, so इसीलिए इनको fireside poets बोला जाता है. Okay. After that, Henry Wadsworth Longfellow, he traveled all over Europe before beginning his career as a professor in Cambridge. Okay. His first major poetry collections were Voices of the Night. It was published in 1939, and Ballads and Other Poems, and it was published in 1841. Okay.
Now, the popularity of Longfellow's poetry is mainly due to the natural grace and beauty of his verse. I told you. So that his, he had the verses or the poems he has written. Okay, they are so simple. The language is lucid, simple, and the theme is also simple. The title is straightforward. Okay, and therefore, in due course of time, he became so popular, as well as his poems are famous because of the simple themes, the spirit of joy, optimism. What does the word optimism mean? मतलब इनकी पोएम जो होती है ना वो आशावादी होती है, वहां से हमको कुछ ना कुछ होप मिलती है, आशा की किरण मिलती है। निराशावादी पोएम्स बिल्कुल नहीं होती है, आशावाद होता है वहां पे। तो एंड फेथ इन गुडनेस ऑफ लाइफ, जब हम उनकी पोएम्स पढ़ते हैं तो हमको ये एहसास बार बार होता है कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, and we started having started believing that the life is beautiful, it's full of life. So only these are the characteristics of the poems of Longfellow, and I'm telling you again and again that he was the best loved and widely known poet of America. Okay, now let's go ahead. Let us know about the poem. As I told you, this particular poem, Nature, is a Petrarchan sonnet, or it is also called as Italian sonnet. Petrarchan क्यों बोलते हैं? Because it was introduced by Petrarch. He was an Italian poet. Okay, so ये जो Petrarchan sonnet होती है बेटे, ये इसमें it has 14 lines. Okay, there are two sections. Okay, having 14 lines. Okay, और जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 8 लाइंस का होता है. यू कैन सी हियर, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अगर, तो यहाँ पे आप देखिए, देयर आर टू सेट्स. ओके, वन सेट इज इन रेड कलर एंड अनदर सेट इज इन ब्लू कलर. ओके, तो ये जो 8 लाइंस होती है, ये 8 लाइंस को हम बोलते हैं ऑक्टेव. ओके, this set is the first set is called as octave. Now this octave has again 2 quadrants. क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है 4 लाइंस, है ना. ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे 8 लाइंस है, तो यहाँ पे 4-4 लाइन के 2 क्वाड्रेंट्स है. ओके, and the rhyming scheme of this octave is, you can see the last word of the first line is rhyming with the last word of the fourth line, isn't it? Okay, so a over here, and then this last word of the second line is rhyming with the last word of the third line. Okay, so what will be the rhyming scheme? A, B, B, A. Again in the next quadrant. Okay, again same, the rhyming scheme is there. Door is, rhyming with more, last the 8th line. Okay, and then comforted and stayed. Okay, these 2 words are rhyming with each other. So again, the rhyming scheme is A, B, B, A. So in altogether in this octave, okay, there is a rhyming scheme. Which is the rhyming scheme? A, B, B, A, A, B, B, A. Now let us come to this sestet, है ना. इसको ये जो 6 लाइंस होती है, इस 6 लाइंस को sestet कहा जाता है. sestet, SESTET, है ना, because there are 6 लाइंस. और ये जो 2 सेट्स का होता है 3 लाइंस ईच. ओके, इसका राइमिंग स्कीम देखिए आप क्या है. अवे, ये तो फिर देखिए, ये जो 4th लाइन है, राइमिंग विथ स्टे, देन हैंड राइमिंग विथ अंडरस्टैंड, go, this particular word is rhyming with no. Okay, so the rhyming scheme is CDE, CDE. Okay, chalo, we'll go back. Okay, so here, so rhyming scheme, as I told you, we have already discussed the octave, the rhyming scheme of octave, first 8 lines, and the rhyming scheme of the sestet. Okay, the last 6 lines. Okay, now the octave, the first 8 lines, in these first 8 lines, the poet has tried to portray the relationship of a mother and child. Okay, in first 8 lines, the poet has tried to explore the relationship of a mother and a child. Okay, and in the next 6 lines, the central idea of the poem, the main theme of the poem has been described, has been given. Now let us talk about the tone of the poem. Who is the speaker? Of course, the poet is the speaker, and who is the audience? We people. The readers are the audience. Okay. Now, what is the tone of the poem?
tone of the poem is contemplative. What does the word contemplative mean? कि जो हमको विचार करने, the things which provoke you to think, है ना, compel you to ponder over it, आपको सोचने पे वो मजबूर कर देता है, उसको हम बोलते हैं चिंता। जैसे बोलते हैं ना, विचार मंथन जैसे करते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉन्टेम्पलेटिव, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। द पोएम इज ऑल्सो इवोकेटिव। इवोकेटिव मतलब आह्वानात्मक है, इसको आवाहक जिसको बोलते हैं, क्योंकि यू नो इट, व्हेन यू रीड द पोएम, व्हेन यू गो थ्रू द पोएम, दिस पोएम ब्रिंग स्ट्रॉन्ग मेमोरीज, images, okay, and feelings to the mind of the reader, है ना। जैसे हम यहाँ पे पोएम पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो इमेजेस पोएट ने यूज की है, बहुत सारे जो सिंबल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, वो पोएम पढ़ने के बाद हम विजुलाइज कर सकते हैं, वी कैन इमेजिन दोस images, okay. So the tone of the poem is contemplative as well as evocative. Okay, now let's go ahead. We have already discussed it. Now let us discuss the title of the poem. इसको ये जो नेचर दिया है ना, नाम उसका क्या है? वी आर स्टडीइंग द पोएम नेचर रिटन बाय हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो। सो इसमें ये जो टाइटल है, ये टाइटल नेचर क्यों लिखा गया है? बिकॉज सी, when we read the poem for the first time, we wonder why the title, why the poem has been entitled nature till we reach the last 6 lines. Because see, the central idea of the poem has been given in the last 6 lines. और जो पहला ऑक्टेव है ना, पहले के जो 8 लाइंस होते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया है, एक बैकग्राउंड तैयार किया है, जो उनको प्रूव करना था, जो सेंट्रल आइडिया, जो थॉट उनका था, वो थॉट को सपोर्ट देने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो फर्स्ट 8 लाइंस है, वो 8 लाइंस वहां पे ये किए हैं। मतलब 2 इसमें हमने डिवाइड किया ना, देयर आर 2 सेक्शंस इन द पोएम। पोएम में 2 सेक्शन है, पहला है 8 लाइन का और दूसरा है 6 लाइन का। ओके, सो the title of the poem is really very simple. The theme is simple and straightforward. जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे हम लास्ट 6 लाइन तक पहुंचेंगे, तो हमको it will be very clear to all of us, to you as well, that what the poem is all about. What is the central idea of the poem? How the poem is connected with nature. Okay, so the central idea of the poem is located in the statements in the last 6 lines of the poem. The title directly refers to the central thought expressed in the poem. We have already discussed this. Okay, now we will discuss the theme of the poem, the background. कोई भी हम जब चीज या कोई लेसन या पोएम हम पढ़ते हैं बच्चों, तो उसके पहले हमको ये बैकग्राउंड पता होना जरूरी होता है, सेंट्रल आइडिया पता होना जरूरी होता है कि पोएम, व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमको पोएट क्या बताना चाहते हैं, isn't it? So let's get started. Here the poet compares the relationship between a child and his mother and the relationship between human beings and mother nature, है ना। जैसे कि मैंने बोला है, यहाँ पे 2 sections है, तो in first section, in first 8 lines, okay, the poet has drawn the picture, drawn the relationship, has tried to portray the relationship between a child and his mother. Okay, and in the next line, in the next 6 lines, the poet has given the relationship between human beings, and means human beings means we people, and mother nature. Okay, so the nature has been compared here to a mother. The mother nature has been compared to a mother, while man has been compared to a child. यहाँ पे क्या किया है, मदर नेचर को, जो माँ है, लविंग केयरिंग मदर है, बच्चे की जो माँ है, उसके साथ कंपेयर किया है। उनका प्यार जो है, जिस तरीके से वो बच्चे को ट्रीट करती है अपने खुद के, वैसे ही मदर नेचर, the poet finds resemblance, okay, the similarity between mother nature and mother of a child. Okay, this poem reminds us of this harsh truth of the nature, that all living beings will meet their inevitable का मतलब होता है unavoidable, जिसको हम avoid नहीं कर सकते हैं, we cannot avoid it, है ना। जो होना होता है वो होता ही है ना। What is this inevitable end? Someday means here he is, ये पोएम जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये हमारे जहन में आता है, या फिर हमको रियलाइज होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स है, वी आर लिविंग थिंग्स, है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड ईच लिविंग थिंग विल मीट इट्स एंड और देयर इनएविटेबल एंड समडे,
है ना, हम इन दूसरी दुनिया से जाने वाले हैं, वी विल डाई समडे, है ना, जो भी अच्छी चीज है, जो भी लिविंग बीइंग है, उसका वो नष्ट होने वाली है, वो सब कुछ जाने ये वाला। लाइफ इज टेम्पररी माय डियर फ्रेंड्स, है ना, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। ये जो यहाँ पे है, नोबडी इज परमानेंट, मैन इज मॉर्टल, एंड दिस इज मैन इज मॉर्टल इज द सेम आइडिया। मीन्स यहाँ पे जो पोएट बताना चाह रहा है, वो यही बताना चाह रहा है कि मैन इज मॉर्टल, हमको जाना है ये दुनिया छोड़ के, है ना। एंड ये जो कैसे हमको मदर नेचर मदद करती है हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की ओर जाने के लिए। सो ही हैज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड और डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग, एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन दिस पोएम। सो पोएम किस बारे में है? ये हमको रिलेशनशिप बताती है, चाइल्ड और बच्चे का, बच्चा और माँ के बीच में जो भी इतना सुंदर सा रिलेशनशिप होता है, जो भी उसका संबंध होता है, वो बताती है। और साथ में उन्होंने उसको कंपेयर किया है एक मदर नेचर और उसके चाइल्ड, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो संबंध होता है, वो किस तरह माँ की तरह ये करती है, उसको ट्रीट करती है, ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे पोएट ने बताया है। ओके, एंड दिस पोएट ऑल्सो रिमाइंड्स अस द हार्श ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, दैट वी human beings, everything which is alive will end someday, will die someday. Okay, so let's go ahead. Now we will discuss the poem line by line, we will discuss each and every line now. Okay, so this is the first quadrant. जो octave है ना, चार जो 8 लाइन से पहले उसके ये 4 लाइन्स। okay, first quadrant. So I'll read these 4 lines first and then we will discuss. As a fond mother, when the day is over, leads by the hand her little child to bed, half willing, half reluctant to be late, and leave his broken playthings on the floor. Okay, as a fond mother, what does the word fond mean? Fond means, see the meanings have been given over here. So the word fond means loving, caring, affectionate mother. The mother is affectionate. When the day is over, leads by the hand her little child to bed, half willing, half reluctant. What does the word reluctant mean? है ना, इससे पहले जैसे हम डिस्कस करें उसके पहले हम मीनिंग्स जान लेते हैं. इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द पोएम इन अ बेटर वे. ओके, सो रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, अनविलिंग, है ना, बच्चा नहीं चाहता है कि वो सोए. Okay, so that this word reluctant means unwilling or hesitant. Now here playthings, now the words which are given in red. Okay, so these are the difficult words. See, what does the word playthings means? The poet here trying it refers to toys, है ना, this word refers to toys, मतलब खिलौने. Okay, now we will discuss. As a fond mother, when the day is over, now the day is over. Here in the first quatrain, as I told you earlier as well, that the poet has portrayed the relationship, beautiful relationship between the mother and a child. Now in the opening line, the poem begins with the picture of a fond mother, of a loving, caring and affectionate mother, okay, taking her child to sleep because the day is over. As the day is over, and now it is time for the little one to go to bed, है ना. अभी शाम हो चुकी है, बच्चा दिन भर से खेल रहा है, अभी जो बच्चे के सोने का टाइम भी हो चुका है. And therefore mother is worried about her child. Okay, and so this fond mother, loving mother takes takes the child by its hand. Okay, and tries to put it to bed, tend it to sleep, है ना. तो यहाँ पे क्या करती है, जो मदर है वो मदर बच्चे को, क्योंकि बच्चा सुनना नहीं चाहता है ना, बच्चा एडमेंट है, उसको खेल, he doesn't want to stop playing, isn't it? And he doesn't want to, the child is unwilling, see, half willing. The child is not very willing to go to bed just now. So there are mixed feelings in the child's mind, okay, at this point of time. ये जो point है ना, जहाँ पे अभी मदर चाहती है, माँ चाहती है कि बच्चा सोए, because it has been playing all day long throughout the day. बच्चा दिन भर खेल रहा है, अभी थक गया है बच्चा, और माँ चाहती है कि बच्चा सोए because it has it is now time for the little one to go to bed.
Okay, so bacha doesn't want to depart from his, playthings, from his toys. Okay, and therefore the boy is, he's half willing. Why, let us first of all, discuss these lines, and then we will discuss this half reluctant to be late. Na? So let me again tell you the meaning of these two lines. See, the poem begins with a fond mother, the picture of the fond mother, loving or affectionate mother, okay, taking her son to bed, okay, because the day is over. As the day is over, and the child has been playing all day long throughout the day, and now it is time for the little one to go to bed, little child to go to bed. Abhi सोने का time हो गया है. Half willing, half reluctant to be late, है ना? There are mixed feelings. The child is half willing and half reluctant. Means that there are mixed feelings in the child minds at this point of time. He doesn't want to go to bed just now. Okay, but at the same time, the child feels, tired. It is exhausted. Okay, it is feeling drowsy, sleepy. Okay, and it may happen that the child may fall asleep quickly. ऐसा होता सकता है कि बच्चा इतना थका हुआ है कि वो उसको जैसे ही बेड पे जाएगा तो एकदम से सो जाएगा, है ना? लेकिन फिर भी देखो ये बच्चा यहाँ पे, he is so addicted, he is so attached to his broken playthings. अब ये जो playthings है आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चा पिक्चर, ये बच्चा खेल रहा है. He is so engrossed in his playing, है ना? ये खेल में पूरा मग्न है ये बच्चा. देखो कहीं देख नहीं रहा है, इतना मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इतना फोकस्ड है ये बच्चा, खेल रहा है ना? And therefore there are the mixed feelings, and this particular boy or the child doesn't want to depart from his broken playthings. भले ही वो टूटे फूटे खिलौने हैं, लेकिन he is attached to them so much. बच्चा बहुत ज्यादा अटैच्ड है ना? And therefore he doesn't want to depart from his playthings, and these broken playthings, broken toys are scattered all over the floor, है ना? ये जो खिलौने हैं, ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऐसे पूरे ऐसे फ्लोर पे, जैसे जिसको बोलते हैं फर्श पे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, है ना? एंड अभी मदर she has done with it. Okay, अब होता है ना कि माँ थक जाती है बोल बोल के, and then what does she do? She holds your hand, okay, and then she takes you to sleep. Okay, आप भी जब मोबाइल खेलते रहते हैं तो आपके मम्मी पापा डांटते होंगे आपको, है ना? क्योंकि आप चाहते हैं कि नहीं नहीं एक मैसेज पढ़ो, किसका मैसेज आया है. यू आर सो जैसे यू आर सो एक्साइटेड, हम रात भी हो जाती है लेकिन हम सोना नहीं चाहते, है ना? वी आर सो एडिक्टेड टू इट. तो सोचो ये तो छोटे बच्चे हैं, जब हम इतने एडिक्टेड है टुवर्ड्स मोबाइल को लेके, तो ये तो छोटे बच्चे हैं ना, तो उसका एडिक्शन आप समझ सकते हैं कितने उनको अपने टॉयज के बारे में कितना प्यार होगा, कितना लगाव होगा. तो सेम थिंग हैपन ओवर हियर. ओके, सो ये आई होप आज इसका मतलब आपको समझ में आया होगा. Okay, so why the child is half willing and half reluctant? Because the child doesn't want to stop playing, stop playing, and he doesn't want to go to bed just now. At the same time, the child is tired. बच्चा थक गया है. Okay, he is feeling drowsy, sleepy, and therefore the child is half willing and half reluctant to go to bed. Okay, so let's go ahead now. These 4 lines, the second means the second quadrant. Okay, so still gazing at them. Again, I will read these 4 lines and then we'll discuss the difficult meanings of the difficult words, and we'll discuss each and every line. Okay, still gazing at them through the open window, open door, nor wholly reassured and comforted by promises of others in their state, which though more splendid, may not please him more. And still gazing. What does the word gaze mean? The word gaze means to look steadily, intently, longingly, with admiration, है ना? जिस चीज को हम क्या करते हैं, मतलब कोई चीज हमको पसंद आती है तो हम उसकी तरफ क्या करते हैं? We look steadily at, you will stare at those things. So the बच्चा here, तो this kid is gazing at these particular playthings, his toys. Okay, nor fully reassured. Reassured का मतलब होता है to remove doubts or fear.
this boy is partially, comforted. है ना? The boy is partially comforted and assured, okay, means to remove doubts or fears by promises of others in their state, which though more splendid. What does the word splendid mean? Magnificent, very impressive, attractive, है ना? ऐसी जो टॉयज है उसको मतलब इसका मतलब होता है कि मैग्निफिसेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव टॉयज. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द लाइंस. अभी बच्चा खेल रहा है, बच्चा जाना नहीं चाहता, तो अभी मम्मी ने क्या किया? शी held her hand, है ना? She took the boy, okay, and laid him to bed. उसको बेड की तरफ लेके गई है माँ. Now, still gazing at them through the open door. Okay, now the mother takes her child away from the playthings which are scattered on the floor. है ना? फ्लोर पे स्कैटर्ड हुए हैं. अब वो बच्चा जा रहा है पीछे. ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, बच्चा देख रहा है पीछे. कहाँ देख रहा है वो? अपने प्लेथिंग्स की तरफ, अपने टॉयज की तरफ. देखो, भले ही वो ब्रोकन है, टूटे फूटे हैं, लेकिन that kid is very much attached to his its playthings. Okay, now still gazing at them through the open door. Now the poet, the child talks about, see here, the child is still gazing at. The child is still looking intently at his scattered playthings, okay, intently, okay, through the open door. The door is open and the playthings or the toys can be seen through the open door. And therefore, when he went to bed, he doesn't sleep at all. He just gazes at the playthings which are scattered on the floor. So जो floor है वहां पे जो खिलौने हैं उसके बिखरे हुए खिलौने थे, है ना? अभी बच्चा बेड पे तो गया है माँ के साथ, लेकिन आंखें बंद नहीं की है ना? देखो कितना अटैचमेंट. अभी भी वो कहाँ देख रहा है? अभी भी वो अपने बिखरे हुए टूटे फूटे खिलौनों की तरफ देख रहा है. Now mother, she is in dilemma. So how to put him to bed? Okay, so माँ क्या करती है? By promises of other in their state. Okay, now she tries to persuade him, tries to convince him to go to bed. अब वो क्या करती है? She promises him other splendid means attractive, beautiful, toys instead of this broken one. She wants to, she tells it that she would replace these broken toys with a new beautiful toys, है ना? तो माँ प्रॉमिस करती है कि देखो अब तुम सोए ना तो मैं तुमको नए अच्छे वाले सुंदर सुंदर खिलौने लाके दूंगी. But now the बच्चा, see, not wholly assured. अब माँ ने तो प्रॉमिस किया है, but the बच्चा means this kid is partially assured by the promises made by the mother, है ना? तो बच्चा अभी भी partial assured है, partial comforted है, okay, and by the promises made by his mother, by its mother, okay, which though more splendid may not please him more. Now he is, I told you that he is partially comforted, and he wonders what if the children, the playthings, okay, which which his mother promises him, he would not find them more attractive or more beautiful than the toys he has to live now, है ना? जो उसको जो फ्लोर पे बिखरे हुए जो खिलौने हैं, वो सोच रहा है, ये डायलेमा में है बच्चा कि हाँ मम्मी तो बोल रही है कि खिलौने लाके देंगी, है ना? बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लाके तो देंगी, लेकिन क्या भरोसा है कि वो खिलौने देख के मुझे वही आनंद मिले या फिर वो उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, है ना? सो ये बच्चे का मन मानने के लिए तैयार नहीं है ना? कि वो सोना भी चाहता है, एट द सेम टाइम वो he doesn't want to depart from his toys, अपने टॉयज से दूर भी नहीं जाना चाहता, and he is in dilemma. He is half assured, not he is partially assured that what if he finds that the playthings more attractive, if क्या बोलेंगे उसको कि मतलब जो प्लेथिंग्स है, टॉयज है, वो अगर इतने अट्रैक्टिव, इतने अच्छे नहीं हुए जो कि मेरे अभी के है ना? तो अभी के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खेलने के लिए, अगर वो नहीं होंगे तो, है ना? तो ये बच्चा ऐसे सोच रहा है.
Okay, so in these 8 lines, अभी ये हमने यहाँ पे 8 lines हमारी octave जो है first section of the poem is over. तो हमने इस फर्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ा है, ये 8 लाइन जो है, इस 8 लाइंस में हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने क्या किया है, he has tried to portray a picture, a beautiful picture of the relationship of mother and a child. समझ में आ रहा है, बच्चे और माँ का इतना सुंदर सा उन्होंने एक प्रसंग उन्होंने दिया है कि बच्चा खेल रहा है और माँ उसको सुलाने के लिए कोशिश कर रही है. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. लेट्स मूव अहेड. ओके, नाउ कैन यू सी दीज आर 6 लाइन्स. तो ये हम अपने अभी लास्ट 6 लाइन्स की तरफ हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं अभी. So I will read these lines again and then we will discuss the meaning. Okay, now. So nature deals with us and takes us away. Our playthings one by one and by the hand leads us to race so gently that we go. Excuse me, Salame sir. Excuse me, Dr. Salame sir. Okay. Salame sir. Please mute yourself. Okay, Please, okay. Please mute yourself. Yes, मुझे yes, yes. डिस्टर्ब हो रहा है सर, प्लीज. Yes. थैंक यू सर जी. So nature deals with us and takes away our playthings one by one. Playthings and by the hand leads us to race so gently that we go, scarce knowing if we wish to go or stay. We बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहा है. सलामे सर, डॉक्टर सलामे, आर यू देयर? Yes, ma'am, I am trying. Sir, please but mute because yourself. of some problem. Yes, yes, yes. Please, sir. Thank you so much. Sorry for the trouble. Okay, so here guys, चलो हम पढ़ते हैं अपने poem की ओर. So nature deals with us and takes away our playthings. है ना, gently का मतलब होता है बहुत ही with great care, है ना, हौले से, अच्छे से, प्यार से. Scarce का मतलब होता है almost none, rare. Okay. Now here sleep और transcend. Transcend का जो मतलब होता है goes beyond. अब इसका मीनिंग क्या है हम डीप में अभी ये जब हम डिस्कस करेंगे ये 6 लाइंस तो हम उसमें पढ़ेंगे. ओके, सो नेचर डील्स विद अस एंड टेक्स अवे. नाउ हियर इन दिस सेकंड सेक्शन ऑफ द पोएम द पोएट फाइंड्स similarity between the relationship of mother nature and her child, means the human beings, है ना, we human beings. Okay, so here there is similarity. तो जैसे ही so nature deals with us and takes away our playthings one by one and by the hand leads us to race so gently. Now देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम human beings, okay, we also we are just like that kid, है ना, जो बच्चा अपने playthings को छोड़ के जाना नहीं चाहता. Okay, now here mother nature, okay, what does she do? Okay, she takes us, okay, takes us means or leads us. Okay, she conducts us throughout the journey of our life. Okay, and helps us, okay, or leads us to the eternal end, or you can say inevitable, or the goal of life, you can say the destination, the final destination of our life. तो हम जो ह्यूमन बींग्स है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है? Of course, we are so exhausted, है ना, we remain busy throughout our life and therefore we need long rest. अभी हमको long rest चाहिए और ये long rest लेने के लिए हमको क्या कर रही है, हमारी जो ये मदर है, मदर नेचर है, okay, she helps us to do so, isn't it? So like the mother of the child, this our mother nature is also so caring, loving and affectionate. Okay, she loves us a lot. Okay, and so like the mother, she takes us, she leads us to the sleep, है ना, she helps us to take us to or to reach to our final destination. Our playthings one by one and takes away our playthings one by one and by the hand. अब जहाँ पे अपने फर्स्ट सेक्शन में देखा होगा ये यहाँ पे पूरा कंपैरिजन है. इन द एंटायर पोएम देयर इज मेटाफर, है ना. तो ये मेटाफर क्या है मैं पहले आपको बता देती हूँ. इन सिमिलीज एंड मेटाफर, ओके, वी कंपेयर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स.
ओके, सो यहाँ पे हमने किसको कंपेयर किया है, मदर नेचर और मदर ऑफ अ चाइल्ड। ओके, वन इज ह्यूमन बीइंग एंड वन इज नेचर, मदर नेचर जिसको बोलते हैं हम। ओके, सो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट बट दे हैव वन क्वालिटी इन कॉमन, है ना। कौन सी क्वालिटी है वो, बोथ आर लविंग एंड अफेक्शनेट, केयरिंग है, लविंग है ना। सो इन सिमिली indirect comparison is made between two different things, है ना, having one quality in common। तो इसमें और जैसे हम यहाँ पे like, such as, resembles, as यूज करते हैं, ये वर्ड्स यूज करते हैं। और यहाँ पे मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है और यहाँ पे हम ऐसे कोई लाइक वगैरह वर्ड्स वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो ये जो पूरी पोएम है, द एंटायर पोएम इज मेटाफर, थ्रू आउट द पोएम देयर इज मेटाफर। मैंने क्योंकि क्या बोला था कि पोएट ने यहाँ पे कंपेयर किया है, क्या कंपेयर किया है, यहाँ पे मदर नेचर को मदर ऑफ द चाइल्ड, जो छोटे बच्चे की माँ है उसके साथ कंपेयर किया है, और जो चाइल्ड है वो चाइल्ड को ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया है। आर यू गेटिंग मी, है ना, बच्चे को हम ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया है। तो indirect comparison is made, so the poem is complete metaphor है उसमें। Okay, so what does this word mean, or playthings, what does this poet, these playthings refer to here, है ना, in this poem। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो बच्चे हैं तो समझ में आता है कि उनके खिलौने हैं, लेकिन we are young, we are mature people। Okay, so हमारे playthings कौन से हो सकते हैं, so हमारे playthings है which we are so fond of, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, है ना, जो हमको बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, वो है ब्यूटी, यूथ, पता है ना, मतलब जो तारुण्य जिसको मराठी में बोलते हैं, यूथ, ओके, जवानी जिसको बोलते हैं, ओके, देन वाइटलिटी, ओके, चैतन्य जिसको मराठी में बोलते हैं आप, विगर, जोम, जोम जो होता है ना, जो काम करने की शक्ति होती है, स्ट्रेंथ, ओके, देन वी कैन से स्टैमिना। Okay, so all these things, these are all playthings which we are so fond of, है ना, we don't want to depart from this, we always get scared of these things। अगर क्या हो कि हम पूरे जैसे we are with the advance of age, as we grow old, okay, so what happens, okay, the mother nature, she tactfully, she beautifully takes each and every our playthings, takes away one by one, ना, अवे फ्रॉम अस वन बाय वन। तो हमसे ये क्या करती है, हमारे जो बहुत ही प्यारी चीजें है ना हमारे पास, जो है यूथ है, ब्यूटी है, तो ये धीरे धीरे एक एक चीज को हमसे छीन लेती है, कम कर देती है। विद द एडवांस ऑफ द एज, और जो विद द एडवांसिंग एज, जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो शक्ति होती है, वो जो एबिलिटी ऑफ टू फिनिश द वर्क, टू डू द वर्क एफिशिएंटली, जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, पैशन नहीं होता है, एनर्जी कम हो जाती है, हमारा यूथ कम होता है, हमारी मतलब स्टैमिना कम होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना। सो ये धीरे 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 ये मदर नेचर क्या करती है, हमसे ये सारी चीजें एक एक करके छीन लेती है। ओके, दैट वी गो scarce knowing if we wish to go or stay। अब बात ऐसी है कि अगेन हमको पूछा नहीं जाता, जैसे बच्चे को माँ ने क्या किया, पकड़ के ले गई है, उसे पूछा नहीं कि डू यू वांट टू स्लीप और नॉट, बच्चे को पूछा गया है नहीं। वैसे ही द सेम मैनर मदर नेचर नेवर आस्क्स अस व्हाट वी विश, व्हाट इज आवर विश, इफ यू वांट टू स्टे देयर एंड नोबडी वांट्स टू डाई। कोई मरना चाहता है नहीं, और हमारी जो इच्छाएं होती है अनएंडिंग होती है, हम मरना नहीं चाहते, हमारी एक खत्म हुई कि दूसरी इच्छा जागती जाती है ना। तो मैन्स विशेष आर नेवर एंडिंग, हमको मरना नहीं चाहते, सब जीना चाहते हैं, बट मैन इज मॉर्टल, हमको ये भूलना नहीं है। एंड थ्रू आउट आवर लाइफ वी ह्यूमन बीइंग्स रिमेन बिजी इन मेकिंग मनी, रनिंग आफ्टर मनी, है ना, वी अमास वेल्थ, हम पूरा वेल्थ को मतलब जमा करते हैं, इतनी सारी चीजें जमा करते हैं मेरे बच्चों, लेकिन जब हम मरते हैं तो हम साथ में नहीं ले जाते, उनको बोलते नहीं कि रुको रुको मैं ब्रीफकेस में लेके आता हूँ जो भी मैंने गहने, जो भी मैंने जो वेल्थ ये की है, जमा की है, वो पैसे वगैरह में लेके आता हूँ। ऐसे नहीं होता, हमारे साथ कपड़े भी नहीं जाते हमारे, देखो कैसी आयरनी है। और हम क्या करते हैं, पूरा जिंदगी भर लोगों को हम मतलब डिसीव करते हैं, चीट करते हैं, हम अपने तक तो नहीं छोड़ते, अपने भाई बहनों को तक नहीं छोड़ते पैसों के लिए, जो कि हम ऊपर लेके जाने वाले हैं नहीं।
So मेरे बच्चों, so throughout the day, throughout our life, we remain busy in, doing lot many things, okay, amassing wealth and everything. And now we are so tired, okay. We need to, we long for long rest, na? Long मतलब we desire, we wish to, rest. जो हम चाहते हैं कि हम अभी आराम करें, क्योंकि हम थक गए हैं। पूरी जिंदगी बोझा ढूंढे ढूंढे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको ये करनी पड़ती है, वी हैव टू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अभी हम थक गए हैं। तो हमारी मदर नेचर क्या करती है, लाइक द मदर ऑफ द चाइल्ड, शी टेक्स हर, शी लीड्स हर आवर हैंड, ओके, एंड शी हेल्प्स अस टू रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन। व्हाट इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन? ऑफ कोर्स डेथ, है ना। सो ये स्लीप जो है, sleep is used as a symbol, my dear friends. Broken playthings जो बोला गया है, these are symbols, all these are images, है ना। ये से sleep है, ये sleep को is the symbol। ये symbol किस लिए use किया है? Eternal sleep, डेथ के लिए use किया गया है, okay। And now अभी क्या हुआ, mother nature with the advance of age, or they say as we grow older and older, okay, mother nature takes takes away or or fond or lovely things, or the playthings one by one, okay। And now we don't have anything with us, we scared knowing if we wish to go or stay। और यहाँ पे भी हमको मदर नेचर नहीं पूछती है कि तुमको यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है, वो बस हमको लेके जाती है ना। सो बीइंग टू फुल ऑफ स्लीप टू अंडरस्टैंड, वी आर फीलिंग स्लीपी नाउ, है ना, हम भी थक चुके हैं, है ना। सो पूरी थ्रू आउट द लाइफ वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड, फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स, okay। So इतना सब performing all our duties and responsibilities, now we are tired, अभी हम थक गए हैं मेरे बच्चों। and अभी we are too full of, हम ट्रांस में है अभी, है ना, ट्रांस में है। जो हम क्या बोलेंगे कि हमारे इस पे मतलब ऐसे नींद है, हम नींद में है, हम धुंध में है ना, हम ट्रांस में है। being too full of sleep to understand, क्या अंडरस्टैंड करना है हमको? how far the unknown transcend the what we know, है ना। what is unknown, okay, we are promised। हमको ये जो मदर, हम जाना नहीं चाहते, देखो, है ना, मतलब जो छोटा बच्चा है वो भी जाना नहीं चाहता, nobody wants to go। तो हम भी जाना नहीं चाहते ये दुनिया छोड़ के, this known unknown transcend what we know, we know this world, this life is beautiful, but we are, mother nature promises us the humanity, the beautiful things after, after the life after death, you can say। मरने के बाद जो बोला जाता है ना बच्चों, आपको बताया होगा कि मरने के बाद हेल में जाते हैं, हेवन में जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं। सो दीज आर थिंग्स, हमको ये नहीं पता, कोई बताने के लिए भी नहीं आता कि एक बार हम गए तो वापस नहीं आते हैं। nobody will tell you whether there is heaven or hell, है ना। लेकिन मदर नेचर प्रोमिसेस, जैसे बच्चे को प्रॉमिस किया है ना उसके माँ ने कि मैं तुमको दूसरे खिलौने लेके दूंगी, हाँ, नए अच्छे ब्यूटीफुल वाले। तो मदर नेचर भी हमको यहाँ पे क्या बोलती है कि आई प्रॉमिस यू द बेटर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, है ना। बियॉन्ड दिस ग्रेव, है ना, जैसे ग्रेव जो जैसे हमको ये किया जाता है ना, मतलब लास्ट राइट परफॉर्म किए जाते हैं और उसको जमीन में ये किया जाता है, बरी किया जाता है, बेरी। तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि इट इज, हम समझ नहीं पाते। एंड दिस वी ऑलवेज थिंक दैट दिस बेटर वर्ल्ड मतलब अब हम जो जी रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज बेटर देन द अननोन वर्ल्ड। ट्रांसेंड मतलब she wants to take us beyond this world, है ना, beyond this life। एंड हमको ये जो हम ये विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको ये वर्ल्ड जो जहाँ पे अभी हम हैं, अर्थ, है ना, we are, these playthings are our earthly possessions, so we don't want to depart from this earthly life, we are so fond of it, we want to live our life to the fullest with our family members, है ना। हमारे यहाँ पे जो है मतलब हम जाना नहीं चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहता मेरे बच्चों। सो हियर द मदर promises us to the better world, but here we human beings, we always in the trance, or we always misunderstand that the world we know that we are living, this earth, है ना, so this earthly life is better than the life which we don't know, है ना, the life after death, है ना। तो ये कैसे होने वाला है इसके बारे में हमको इतना ज्यादा पता नहीं है। तो ये ये जो पूरा जो सार है, द थॉट है, या फिर जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, ये पूरा ये 6 लाइंस में दिया गया है, सेस्टेड जिसको बोलते हैं।
इतना समझ में आया होगा आपको। तो अभी हम जो पोएम में जो यूज किया है पोएटिक डिवाइसेस, वो पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। Yeah, 49. We still have time. Okay. So let us discuss these poetic devices used by the poet. Now, ये poetic devices का मतलब क्या होता है ना? तो poet uses different figurative language, imagery, जो अलग अलग poetic devices use करता है, figures of speech use करता है to enhance the beauty of the poem and to make it more effective, है ना? तो अपील कर सके, अच्छी दिखे, अच्छी सुनने में लगे, इसलिए वो क्या करता है, poetic devices use करता है. So as I told you earlier that in this complete poem, the poet has used metaphor. Because in this metaphor we compare things. जैसे कि पहले हमने ये मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि what is metaphor. In metaphor, यहाँ पे metaphor में हम क्या करते हैं, we compare two different things having one quality in common. उनमें एक quality common होती है ना? So यहाँ पे there are two sections in the poem. जैसे कि मैंने पहले बोला है आपको, फर्स्ट सेक्शन में poet ने क्या किया है, the poet has portrayed the picture, a beautiful picture of the relationship of mother and the child. The mother is trying to put her baby to sleep, है ना? और इसमें अभी मेटाफर में इन्होंने क्या किया है poet ने, the poet has compared mother nature to a loving and caring gentle mother, है ना? And man to the child, the human beings to the child. बच्चे जैसे एडमेंट होते हैं, है ना, स्टबर्न होते हैं, तो वैसे ही, और जो बच्चों में आसक्ति होती है अपने खिलौनों को लेकर, वैसे ही आसक्ति, सेम आसक्ति हमको होती है. वी आर सो फॉन्ड ऑफ और अर्थली पोजेशंस. हम ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, हम हमेशा यंग रहना चाहते हैं, है ना, वाइटलिटी, विगर, जो भी है, एनर्जी है, तो ये सारी चीजें हमको बहुत प्यारी होती है मेरे बच्चों. ओके, सो मेटाफर यूज किया है. आई होप मैंने ये पूरा डिस्कस किया है पहले ही, तो आपको समझ में आया होगा. Now the poet has used various symbols over here to make the reader understand, okay, the central idea of the poem. What does he want to imply over here? जो भी बताना चाहते हैं, तो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सिंबल के द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश की है. So here the poet has used the word sleep. We discuss it. Okay, he has used this word sleep for death. Okay, this is the abstract idea. Okay, death. He means here the long, eternal sleep. Okay, so and here the playthings again are, the playthings refer to the benefits of youth, the attributes of youth, you can say, the earthly possessions of human being. तो ये earthly possessions के बारे में मैंने playthings के बारे में already बता चुकी हूँ मैं. क्या क्या है ये? Beauty, youth, vigor, vitality, then energy, stamina, strength, है ना, ये सारी चीजें हैं, ये हमारी playthings है. तो here sleep means here the human beings, we people are tired, okay, and now after living our life to the fullest, and now it is we are drawing nearer and nearer to the end of our life. Okay, so mother nature, she realizes, she understands our problem, okay, understands our situation, and she comes to our rescue. मदर नेचर हमको जैसी प्यारी, उसकी मदर माँ है बच्चे की माँ, वैसे ही ये जो माँ है, मदर नेचर है, वो हमको बहुत ही प्यार से, gently she takes us away, or she leads us to the final destination, that is death. Okay, for the she prepares us, है ना, for the eternal sleep. जो बच्चे के बेटे, अभी तुमको सोने की जरूरत है, अब तुमको रेस्ट करने की जरूरत है, और उसके लिए वो क्या करती है, धीरे धीरे ये सारी जो प्लेथिंग्स है, हमारे जो सारे खिलौने हैं, है ना, एट्रीब्यूट्स है, बेनिफिट्स ऑफ यूथ है, ये सारे हमसे एक एक करके छीन लेती है. Okay, now here the poet has also made use of imagery. Imagery का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको कि when we go through the poem, we can imagine those things, है ना, जैसे broken playthings बोला तो आपके सामने टूटे हुए खिलौने आ गए होंगे. लविंग मदर बोला तो वो माँ का एक चित्र आपके मस्तिष्क में आया होगा, उभर आया होगा. और जैसे ही हमने एक पिक्चर देखा है कि माँ अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है, तो आपने वो भी इमेजिन किया होगा, है ना, कि दैट पिक्चर ऐसी क्वालिटी है कि एक माँ बच्चे को लेके जा रही है और उसको सुलाने की कोशिश कर रही है. सो दीज आर ऑल इमेजेस. कौन कौन से इमेजेस यूज किए, देखिए, ब्रोकन प्लेथिंग्स, है ना,
जो टूटे हुए खिलौने। तो ये ब्रोकन प्लेथिंग्स हमारे इसमें कौन कौन से हैं, जो कम होते जो से यूथ है, तो अभी द विद द एज, ग्रोइंग एज, हमारी अभी वाइटलिटी विगर सब कम हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रहा है, हमारी ब्यूटी कम हो रही है, हमारे मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं, isn't it? Okay, now still gazing at them through the open door. देखो इतना सुंदर है ये जो सेंटेंस है ना, this sentence is used for this particular imagery, used for the elderly people, है ना? Now these people are drawing nearer and nearer to their end, death. Okay, and now these people, these elderly people, they are looking back on their life and on their previous life, जैसे जो जब ते यंग थे, है ना, बोलते हैं कि नहीं, वो भी क्या दिन थे जब वो हम यंग हुआ करते थे, ऐसे करते थे, वैसे थे, हम छोटे बच्चे थे तो ऐसे करते थे, है ना? So still gazing at them through the open door. So these line implies, the poet tries to imply over here that the elderly person, they always they go down the memory lane, है ना, जो वो याद करते हैं कि कितने सुंदर दिन थे जब हम यंग हुआ करते थे, isn't it? So वो पूरे बीते हुए दिनों को याद करते हैं, that is still gazing at through the open door. जैसे बच्चा देखता है ना अपने टूटे हुए खिलौनों को, वैसे ही लॉन्गिंगली, अभी देखो हम बूढ़े हो चुके हैं तो हम यंग हो नहीं सकते, है ना, वो हम वापस नहीं जा सकते, we have lived our life and now it is time to rest, long rest, है ना, सोने का टाइम है अभी. And here the poet portrays how an elderly person might look back on his or her life. We have discussed this, and how as they age, their youth is now broken. अभी हम बूढ़े हो चुके हैं, धीरे धीरे वो सारी चीजें हमसे छीनते जा रही है, और कौन छीन रहा है? हमारी प्यारी माँ, मदर नेचर. So thank you so much for the patient hearing. So here in this beautiful poem, the poet Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow, has beautifully compared the child of the mother, as well as the mother nature. Okay, and how they beautifully they take care, how gently they take care of their children. The mother takes care of her child, as well as the same manner mother nature takes care of us, we human beings. Okay, so it's time to understand that whatever you do, you must do, you must do it, you ought to do it. But at the same time, there is an appeal from me, dears and darlings, that don't forget to live your life. When you will perform your duties and responsibilities, don't forget to live for yourself. Live your life to the fullest, that when you will leave this world, you will say final goodbye, adieu to this world, this worldly worldly or earthly world. Okay, there will be no regret in your heart कि अरे ते राहुल गेला, वो रह ही गया, मैं जी नहीं पाया, मैं पूरा जिंदगी बोझ ढोते ऐसे रह गया हूँ, जिंदगी जीना तो मैं भूल ही गया. तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो ये मेरी इतनी सी अपील है कि live your life to the fullest. Okay, thank you so much for the patient hearing, and thank you so much to the organizers for giving me this wonderful opportunity to not interact actually, to share my expertise with the students. Thank you all once again. I'll stop sharing. Yes. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Vaishali Meshram, ma'am, for delivering such a wonderful session. Certainly, the student must have immensely benefited by your lecture. Thank you so much, ma'am. Let me now invite Dr. Pramod Salame, sir, to propose a Yes. formal vote of thanks. Over to you, sir. Yeah, thank you, ma'am. Actually, today I was the anchor, but because of some technical problem, I could not join. I called Ajit sir and he said, okay, you propose vote of thanks. So I'm quite regretful for this. Okay. Good morning, everybody. Students of all the colleges of Rashtra Santa Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, as well as YouTube viewers are getting benefited from this lecture series. BA 4th semester, compulsory English. It's my duty, I'm Dr. Salame, Nabira, Mahavidyalaya, Katol, to propose vote of thanks to today's guest speaker, Dr. Vaishali Meshram ma'am,
of Dr. M.K. Umathe College, Nagpur. Students, this lecture series is organized by the colleges like Barrister Sheshrao Wankhede, Mahavidyalaya, Mohpa, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur, Nabira, Mahavidyalaya, Katol, and Jawaharlal Nehru Arts, Commerce, and Science College, Wadi, Nagpur. That is really, recommendable job. I am quite grateful to all the principals of these, colleges, as they give permission to the departments of, English of all the colleges. So I must say thanks to all these, principals of the colleges. My special thanks to Dr. Vaishali Meshram ma'am, uh, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur, who enlightened our students and as well as all, delivering, a very great speech on the poem Nature, written by H.W. Longfellow, with so many, beautiful examples about the topic nature, which is quite powerful, than all. Her way of teaching, speaking, talking, it was really, quite nice. As we all know, nature takes examination first, and later nature teaches about the syllabus later. So we know about these things well. So mother, nature, and the mother in the, poem, she beautifully, showed, told so many things, well. I'm quite thankful to Dr. Vaishali, ma'am, and I say sorry to her because of technical problem. No My problem. No issues, sir. I'm really very yeah, sorry. that was going on. I was trying, but that was going, on. So sorry, ma'am, to you. No I'm problem. quite No grateful issues. to, yeah, sorry, ma'am. I'm quite grateful to Dr. Ajit, sir, who made this facility available for the, and actually this is, I think, the first time all the students, of our university, they are getting, benefited, and they are, listening, they are watching all the videos on YouTube, as the teachers, they, delivered their, speeches on the, given syllabus. And I got the feedback that they are understanding well. So that is a big achievement. And today, Indeed. yeah, today's, speech, really, as Vaishali ma'am, delivered, so very nice. Not only students, they got benefited, but we teachers, we also understood so many things from this, sonnet, from this, poem. So I am quite grateful to, Vaishali, Dr. Vaishali ma'am. Okay. Then Ajit sir, as he made this, facility available, and for the students of BA fourth semester, compulsory English, RTM Nagpur, University Nagpur, really his efforts, behind this are unforgettable. And all of the, teachers, all the organizers, and all of the people. So I'm grateful to, all. And that practice should go on in the future also, as I think, really, because students, they got the, habit of offline and now online too. So in future they will see on YouTube lecture of Vaishali ma'am on YouTube, lecture on Bansod sir on YouTube, lecture on, so and so teachers on YouTube. So that will be benefited in the future also. See, so that is very nice, and that is beneficial to all students, as I told, even teachers like me, and I am thankful to all. Again, I am thankful to all who, worked hard, who were on the curtain, off the curtain, and they, made and making the, lecture series
successful for the sake of the students. Our target is, students. Target word is not good, but our motto that students should be, become, we can say, good. So I'm thankful to all. And again, I'm thankful to all the teachers, the people, even the students who joined, and all the people. Thanks to all. Thank you, ma'am. Thank you so very much, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Yeah. I now, with the consent of the coordinators, declare that the today's session comes to an end. We will meet tomorrow at 10 a.m. with the next topic. Thank you, everyone, and have a wonderful day. A day after Thank you, tomorrow. ma'am. Yeah, on Monday. Dear students, Thank you, sir. Thank you so much, Rajak sir. thank Thank you, you. Fateh madam. Thank you, ma'am. Thank you. Our pleasure, ma'am. Our pleasure. Dear students, since it is Sunday tomorrow, we'll meet on Monday. Yeah. Yeah. Thank you, Thank you, everybody. Jachak sir. Have a Thank you, great day Fateh ahead. ma'am. Yeah.